Good morning students once again and welcome to the lecture number 2 of some basic tools used in mathematics, chemistry and physics. Sir, अभी करवा क्या रहे हो और अभी क्या करवा रहे हो? Actually what I am trying to do is very simple techniques जो आपको क्लास 11th के अंदर स्टार्टिंग में ही लगेंगे, जिनके बिना टेक्निकली आप आगे नहीं जा सकते हो. Okay. So yesterday we did understand the word differentiation और कैसे वो formulas आपको help करेंगे आगे जाने में. Today we are going to use once again what is known as product rule, chain rule and quotient rule in differentiation. फिर उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Also we are going to solve some simple problems based on logarithm. And also we are going to understand and introduce a new concept known as vectors. And of course guys, ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी है in physics के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 में. In the same way logarithm बहुत जरूरी है, the same way differentiation too. So let's understand guys. First word is differentiation and let's write say first question known as say मैंने लिखा है यहाँ पर log 7x. Now please understand मैंने जब यहाँ पर ये log 7x लिखा and somebody has asked me to find derivative of this. Find d by dx. किसी ने बोला मुझे इसका फाइंड करना है. यदि आपको d by dx फाइंड करना है तो कॉमन सेंस से इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा? x, राइट? Now problem is log के ये डिग्री के अंदर है and as I told you yesterday we cannot do anything with the part of degree. So log 7x को सॉल्व कैसे करूंगा? Very simple. आपको मालूम होना चाहिए log x का डिफरेंशिएशन कल के फॉर्मूले से क्या होता है? It is 1 upon x. So let's write 1 upon 7x. क्यों? Because log 1 upon x, right? So 1 upon x, क्योंकि ये डिग्री पूरी x है तो मैंने ये लिख दिया and dot d by dx of 7x. Now this is known as chain rule. पहले तो मैंने इस log 7x को मैंने x मान लिया. So log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 upon x. अब मैं इस x का भी डिफरेंशिएशन करूंगा. क्यों करूंगा? Because ये एक्चुअली में तो x था ही नहीं, तो आपने माना है. So it would be d by dx of 7x. So what is going to be the answer? Answer is going to be 1 upon 7x into 7x का डिफरेंशिएशन is 7. 7 and 7 will get cancelled. Answer is 1 upon x. Let's take another question. The question will be d by dx of, मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा था कि ऊपर लिखा हुआ था, d by dx of, मान लो मैंने लिख दिया cos 2x. तो पहले तो चेक करो कि cos की डिग्री क्या है. cos की डिग्री है 2x. मान लो एक मिनट के लिए इसको मैंने मान लिया cos x. So differentiation of cos 2x is going to be minus sin x. But x के जगह पर तो 2x लिखा है तो 2x लिख दिया. अब ये माइनस साइन कहाँ से आया? If you have not seen the yesterday's video, then please do see the yesterday's video of differentiation जहाँ मैंने formulas लिखवाए हैं and then you can understand. So cos 2x का formula is minus sin 2x. अब dot d by dx of 2x, क्योंकि डिग्री 2x है तो आंसर आ जाएगा minus 2 sin 2x. क्यों? 2x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1. तो 2x का डिफरेंशिएशन is 2. अब बोलोगे सर लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ? खुद देखो, x के ऊपर में पावर कितनी है? It's 1. And what is the formula of d by dx of x to the power n? It should be equals to n x to the power n minus 1. So x to the power 1 होगा तो ये 1 आगे आएगा, यहाँ पर आएगा 1x, 1 minus 1, 1x to the power 0. Anything raised to the power 0 is 1, so the answer is 1. That's all. Now let's move ahead. ये भी हो गया. Let's move ahead now with the third question. d by dx of, मान लो मैंने लिखा tan 5x. Now if I am talking about the word tan 5x, तो अब मैं क्या करूंगा?
सबसे पहले तो tan x मान लिया इस पूरे के पूरे को। यदि ये tan x है, so that means the answer is going to be sec square x. What is x? 5x. अगेन डॉट, इसको आपने x माना है, एक्चुअली में वो x नहीं था, so then d by dx of 5x. so आंसर आ जाएगा 5x का डिफरेंशिएशन इज 5, क्योंकि x तो 1 ही होता है, तो 5 into 1 is 5. so 5 sec square 5x. सर लेकिन 5 तो कांस्टेंट है, तो आपने तो कल बोला था कांस्टेंट 0 होता है. ऑफ कोर्स, सपोज किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, d by dx of tan a to the power b, tan a to the power b. so what do you think the answer should be? very simple. अब tan a to the power कुछ भी हो गाइस, मुझे क्या चीज वेरिएबल है? x. यहां पर कहीं पर x है क्या? नहीं. तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का आंसर इज 0. बट यहां पर 5 कांस्टेंट था, लेकिन x के साथ में था, तो मैंने 5 को ऑपरेटर के बाहर निकाला और d by dx of x, x का डिफरेंशिएशन 1. सो आंसर इज दिस. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. d by dx of sin root x. अब पहले तो एक काम करते हैं, जरा रूट x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं. सो d by dx of root x. so it can be written as d by dx of x to the power half. right? so what do you think the answer should be? Half is going to come forward, so it will be 1 by 2 x, 1 by 2 minus 1, which is going to be minus half. so can I write it like this? 1 by 2 root x. This is the answer. अब ये क्यों बताया सर, लेकिन आंसर तो sin root x है. लेट्स सी, sin x, इस पूरे को x मान लेते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x, as it is like there. बट ये तो x नहीं था, so d by dx of root x. so what do you think should be the answer? Answer should be root x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 2 root x. we are going to write 1 upon 2 root x dot sin root x का cos root x. let's see another question. d by dx of, मैंने ले लिया log 5 और सॉरी log sin x cube. पहले तो ध्यान रखो, log के बाद में जो भी आता है उसको डिग्री बोलते हैं. सो एक ब्रैकेट लगाते हैं. d by dx, इसका मतलब x इज द वेरिएबल. सो log, आप इस पूरे को x मान लो, log x. व्हाट इज द आंसर फॉर log x? 1 upon x. राइट? अब आपने इसको x माना है, एक्चुअली में तो ये x नहीं था. सो d by dx of sin x cube. right? but is this the answer? no. why? because अभी हमें इसका भी तो d by dx करना है. so let's see. so ये हो जाएगा 1 upon sin x cube. अब d by dx of sin x cube, sin इस पूरे को मान लेना x, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x cube. करेक्ट? बट आपने इसको sin x माना, तो अभी इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सो d by dx of x cube. so what is the answer? it should be equals to 1 by sin x cube dot, फिर यहां पर आ जाएगा cos x cube dot, फिर d by dx of x cube is 3x square. now you can simplify this. क्यों x cube का 3x square क्यों आया? ये पावर आगे आ जाएगी और ये पावर का. सो आंसर हो जाएगा cos x cube upon sin x cube is cot x cube according to class 12, class 10 sorry, cot x cube and dot 3x square.
So this is how you are going to do what? The chain rule. अब आ जाते हैं हम जरा क्वेश्चन रूल पे. अच्छा एक और क्वेश्चन बता देता हूँ बिकॉज जस्ट एकदम से दिमाग में आया. Suppose somebody gave you this question, d by dx of root tan x. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल. आंसर इज आप इसको रूट x मान लोगे. रूट x. What is the answer for root x? 1 upon 2 root x. और x की जगह पर फिर से tan x. अब लेकिन आपने इसको x माना, ये एक्चुअली में तो x था नहीं. सो डॉट d by dx of अब केवल अंदर का that is tan x. So what do you think is the answer? Answer is 1 by 2 root tan x dot tan x का differentiation is sec square x. So it should be equals to sec square x whole upon 2 root tan x. And that's all guys, it is done. Answer. But then ये क्यों बताया? This generally ऐसे दिमाग में आया है question. Now let's move on to the word product rule. Then we are going to move on to the word question rule. Now guys remember, यदि आपने ये कर लिया तो यदि आपने आज का कल का लेक्चर देख लिया तो आपको थोड़ा सा एक शॉक मिलेगा बिकॉज आपका मैथ्स का एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका होगा. That is for the state board as well as the CBSE board, even the ICSE board also, which is also known as what? The IGSE. Okay. Anyway, so let's now move on to the word product rule. So now what do you mean by the word product rule? प्रोडक्ट रूल सेज यदि डिफरेंशिएशन करना है आपको कोई भी दो चीजों का और दोनों वेरिएबल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल d by dx of fx डॉट gx. मान लो दो है आपके पास में, ये मान लो फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ये सेकंड पे लिखा हुआ है. d by dx होने के दोनों में x होना चाहिए. ओके. सो d by dx of this should be equals to first function into differentiation of second function plus second function into d by dx of the first function. सर ये क्या है? अरे गाइस बहुत सिंपल है. नाउ लेट्स सी कैसे. सबसे पहले सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया एंड दैट इज d by dx of sin x डॉट tan x. सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगाने के पहले क्या दोनों फंक्शंस में x है. हाँ ये एक फंक्शन है इसमें x है, ये एक फंक्शन है इसमें भी x है और बीच में इनटू का साइन है. सो आई कैन अप्लाई दिस. सो किसी भी एक को फर्स्ट मान लो, किसी भी दूसरे को सेकंड मान लो. आप चाहो तो इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, इसको भी सेकंड मान सकते हो. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, that means sin x as it is dot tan x का d by dx of tan x plus tan x as it is dot d by dx of sin x. Now how are you going to do it? Very simple. sin x की जगह पर sin x ही रहेगा. d by dx of tan x will become sec square x plus tan x की जगह पर tan x ही रहेगा and d by dx of sin x will become cos x. कहां से आए फॉर्मूलेस? कल जो किया था. सो आपका फाइनल आंसर इज sin x dot sec square x plus tan x dot cos x. That's all answer. Let's see one more. सपोज किसी ने बोला d by dx of e to the power x dot root x. पहला काम चेक करो क्या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में दोनों में x है. हाँ x है, इसमें भी x है. सो इसको ले लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेता हूं सेकंड फंक्शन.
अब आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. So what do you think the answer is going to be? It should be equals to e to the power x. D by dx of root x is going to be 1 upon 2 root x. कहाँ से आया? Just आज ही के लेक्चर में निकाला था root x का डिफरेंशिएशन. Now plus root x and dot d by dx of e to the power x. E to the power x. That's all. So in simple words, guys, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे छोड़ दो, फिर डिफरेंशिएशन सेकंड का करो, प्लस सेकंड को ऐसे छोड़ दो, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो. यदि आपको उल्टा भी लेना है तो भी आ जाएगा. सेकंड को ऐसे छोड़ो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, प्लस फर्स्ट को ऐसे छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो. तो ये हो गए सिंपल क्वेश्चंस अगेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन रूल. अब क्वेश्चन रूल क्या होता है? सो लेट्स राइट इट राइट अवे. Question rule. Now, what actually do you mean by the word question rule over here? Let me change the mark. Question rule is something like this. Fx means d by dx of. ये रूल लगेगा जब भी कभी कोई चीजें डिवाइड में होती है. आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x है. फिर आप ये रूल लगाओगे. रूल होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर, देन कम्स डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू d by dx of denominator. That's all. अब सर ये क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. Let me do it. So rubbing this off. Okay. Now let's see this. Suppose करो मेरे पास में एक क्वेश्चन है d by dx of and क्वेश्चन है sin x upon cos x. सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या न्यूमरेटर में x है. यस. क्या डिनोमिनेटर में x है. यस. इसका मतलब क्वेश्चन रूल लग सकता है. क्या करूंगा जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर, देन जो भी डिनोमिनेटर है क्वेश्चन का जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator. अब इसको सॉल्व कर दो. cos x की जगह पर cos x आएगा, d by dx of sin x भी cos x आता है, माइनस साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स आएगा. d by dx of cos x कितना होता है? माइनस साइन एक्स. सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस साइन एक्स होल अपॉन cos x का होल स्क्वायर वुड बी नॉर्मली नोन एज cos स्क्वायर x. अब cos स्क्वायर x plus sin स्क्वायर x. व्हाट इज cos स्क्वायर x plus sin स्क्वायर x? क्लास 10 का फॉर्मूला है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और गाइस प्लीज भूल से भी ये मत कर देना ऐसे नहीं कैंसिल होता. ओके, सो cos square x plus sin square x is 1 upon cos square x. क्यों? Because according to class 10th formula of trigonometry, cos square x plus sin square x is 1. So 1 upon cos square x will become what? Will become sec square x. और यदि आप ढंग से देखो तो d by dx of sin x by cos x जिसका नॉर्मली मतलब होता है tan x. So tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec square x. You can prove this also.
Let's move on to another question. Suppose I have got d by dx of, let's say मेरे पास में एक और क्वेश्चन है like this, that is right root x and यहाँ पर मैंने लिख दिया cosec x. अब क्या करोगे? सबसे पहला काम चेक करोगे whether the numerator contains x as a variable. Yes. Whether the denominator also contains x as a variable. Yes. So can we apply quotient rule? Yes, yes. Now very simple. As usual, denominator whole square. Denominator whole square. Then denominator, question का जो denominator है, denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator. So what? So simple. Now root x की जगह पर root x आएगा dot d by dx of cosec x. What is cosec x? Very simple. It is known as minus cosec x cot x. Formula कल की शीट से. Then bracket close minus cosec x as usual. d by dx of root x will be 1 upon 2 root x whole upon root x whole square. So root x whole square will become what? That is x. Correct? Now very simple. ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास में माइनस रूट x डॉट कोसेक x कॉट x माइनस कोसेक x by 2 root x whole upon x. Now if you want to do that cross multiplication तो ये हो जाएगा 2 root x into x will be 2x and then cosec x cot x minus cosec x upon नीचे कर सकते हो तो वो भी आप लिख सकते हो यदि आपको लिखना है तो you can write it like this, that is 2 root x into root x will be 2x, of course the minus sign, cosec x cot x, cosec x cot x, and then comes minus cosec x, minus cosec x whole upon and 2 root x denominator में है तो वो और भी यहाँ पर चला जाएगा. So it is going to be 2 root x dot x. Base same है तो you can add up the power and you can write it like this, that is 2 x to the power 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 and that's our answer. So this is how you do simple questions on product rule, chain rule and quotient rule. Now without wasting time, let's now jump on to simple problems of what? Of logarithm. देखते हैं आखिर उसमें क्या है. Okay. Now if I need to solve say logarithm, suppose किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया. Solve and somebody has given you this question. Log of 360 minus log of 8 whole upon log 16. Somebody has given you this question. Now very simple word. First of all you need to see that what are the properties. Log m minus log n. So it should become log m upon n, that means 360 upon 8 and denominator log 16. So let's cut it. So ये वाला पार्ट आ जाएगा 2 4 times 2 180 times 2 2 times 290 times 2 and this would be what 45, right? Now तो ये आपका जो simplified version हो चुका है, that is log 45 upon log 16. Can we simplify it more? Let's see. So let's write 45 in the prime factorization. So this could become 3, 1 times 15, 3, 5 times 5,
one time. So this will be 3 into 3 into 5. So let me write it like this. Log 3 is 2 times, so 3 square into 5 whole upon log 16. Now आपको मालूम है गाइस 16 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे, so 2 8 times, 2 4 times, 2 2 times, 2 1 time. So that is log 2 to the power 4. Now if you are going to write it like this, very simple guys, it should be equals to what? Log n into n. तो ये हो जाएगा log m plus log n whole upon, ये वाला पार्ट हो जाएगा log m to the power n, which is 4 log 2. क्यों? Because log m to the power n can be written as n log m. Yesterday's property. Log m into n will be written as log m plus log n. Can be furthermore simplified. So ये आ जाएगा 2 log 3 plus log 5 whole upon 4 log 2. That's all. So this is how you solve simple questions on what? Log. Very simple guys, बस आपको solve ही करना है. That is इसकी prime factorization, इसकी prime factorization, and that's all. It is done. It is not that tough. Let's solve one more. Guys, suppose करो किसी ने आपको एक ये नंबर दे दिया. Log of 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.022 into 10 to the power 23 whole upon 1.67 into 10 to the power minus 27. Now in tomorrow's lecture I am going to ideally show you that how we use these kind of values and how do we get the answers. But currently I just want you to know that आखिर इसको open कैसे करेंगे. Very simple. It can be written as log m into n. So it can be written as log m plus log n and guys इस पूरे log m upon n भी है, तो इसका मतलब log m upon n will be log m minus log n, तो ये माइनस में आएगा. So let's write minus log and that's all guys. Now tomorrow, in tomorrow's lecture, of course I am going to tell you that how to solve these values using what is known as log table, and which is very important lecture. Okay, now let's move on to the last topic for today, which is known as vectors. So आज केवल मुझे इंट्रोड्यूस करना है vectors को. So what actually do you mean by the word vectors? Vectors are basically those quantities which deals with what? Direction as well as magnitude. So vectors वो होते हैं जो direction and magnitude दोनों पे डिपेंड करते हैं. Direction, magnitude मतलब say for example the word force. Now force के अंदर I am applying a force, but everybody is going to ask me in which direction. So this और in this quantity मुझे ये भी बताना है कि मैंने कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया. लेफ्ट लगाया, राइट लगाया, ऊपर किया, नीचे किया, कहाँ फोर्स लगाया. So I need to show the word direction. Such kind of quantities which are represented by magnitude as well as direction is known as what? Vectors. Then what do you mean by the word scalars? Scalars जिनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती और उनको डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं होती. For example, mass. What is the mass of your body? You are going to say, sir, 50 kgs. अब मैं ये थोड़ी पूछूंगा 50 kg कहाँ पर था, ऊपर था, नीचे था. 50 kg पूरी बॉडी का था. So mass के अंदर कभी भी हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं, केवल डायरेक्शन हम उन क्वांटिटीज में लेते हैं जिनके अंदर वेक्टर्स के जिनको हम वेक्टर्स बोलते हैं. वेक्टर्स का एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा?
it can be force, it can be acceleration, it can be velocity. Scalars में कौन-कौन से हो जाएंगे? Mass, what else do you think? Volume, area, density. So all of these things are what? Scalars. Why? Because density is equal to mass upon volume. Mass be scalar, density be scalar. Another quantities can be what? Work, speed. Got it? So these will be known as scalars. कल मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो कल का लेक्चर लॉगरिथम और स्केलर्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो डू रिमेंबर द पार्ट गाइस. ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी. एंजॉय. एंड इफ यू वांट टू बाय द वे रेफर एनी ऑफ योर फ्रेंड फॉर सीइंग दिस, देन डू बाय द वे send them a link so that they can subscribe. Hopefully very soon the coaching centers and the schools are also gonna open up. So let's wait. Thank you guys once again. Keep smiling. Love you all. Bye.